and welcome. You're watching a fresh and new edition of Market Masterclass on Money9, India's first multilingual platform for personal finance. From TV9 News Network, I am Sakshi Batra, and on this show, we get you introduced to market experts who help you understand how should you really approach the markets right now, and what are the most prudent strategies that you as a retail investor can really adopt at this point in time. Joining us is a very special guest right now on this show is Mr. Deepak Shenoy, founder, Capital Mind. Thank you very much, Mr. Shenoy. It's a pleasure to have you with us on Money9. Thanks so much, Sakshi. It's an honor to be here, and thanks for inviting me. Thank you so much, sir. So recently you wrote about how retail investor is the biggest player in the stock market based on the NSE data. And this is not only just surprising, but a very welcome finding. So help us understand how has this happened? What has really led to this? So it's a worldwide phenomenon, it seems, Sakshi. We've seen this happen in the US, where the retail investor was less than 10% of market trading volumes. And today we are sitting at roughly, I think the numbers are as much as 25% in the US. In India, since 2016, the 5-year period has seen India go from 33% retail market share. When I say retail, I mean people who are not corporates, who are not mutual funds, who are not institutions, who are not banks. So effectively, no companies, all either individuals or HNIs who are trading in personal accounts. These account now for 45% of the total market trading volumes. This is now not just in the cash markets, which is 45%, but also in futures and options, individual index futures, stock futures, and I think index options as well. These are the largest players. I think in stock options, you might see some brokers who are a little bit higher, but overall, the numbers show that retail presence has increased dramatically. This is not necessarily bad, but it does point to a little bit more about euphoria in the market, in the presence of retail investors increasing to a point where half the volumes are by retail, could indicate a little bit of a lot of enthusiasm. And sometimes in the past, when we have seen such volume spike to this level, it does indicate that the market becomes a little more vulnerable because retail investors don't have a lot of capital to be able to survive a deep fall. So market just becomes a little more vulnerable. But otherwise, you can see the momentum in the market. It just seems to be going up. ओके सर, हमने अभी ये देखा, जैसे अभी आपने भी पॉइंट आउट किया कि साल 2020 में लॉकडाउन जब आया तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच और हमने बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स खुलते हुए देखे। 1 करोड़ डीमैट अकाउंट साल 2020 में खुले हैं एडिशनल। तो क्या ये सेकेंड वेव में अभी जब हम हैं, जब 20 स्टेट्स ऑलमोस्ट लॉकडाउन में दोबारा हैं, क्या ये ट्रेंड आपको नजर आ रहा है कि दोबारा कंटिन्यू हो रहा है और ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है? खासतौर पर इस डेटा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं कि ना ही केवल कैश में लेकिन एफएनओ में, दोनों में ही स्पेसेस में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट या तेजी या फिर इंक्रीज नजर आ रहा है आपको पीरियोडिकली, तो ये कहाँ से आ रहा है? ज्योग्राफिकली कौन सी स्पेसेस से रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा आ रहा है? क्या अभी भी ये मेट्रोज में ही सीमित है या फिर आगे भी बढ़ रहा है? तो एक दो तरह से अगर हम देखें तो एक तो ज्योग्राफिकली और दूसरा डेमोग्राफिकली। अगर डेमोग्राफिक के बारे में सोचे तो अगर आप देखो कोविड की वजह से जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब हो रहे हैं। वो बस डिफरेंस बढ़ रहा है क्योंकि जो जिनके पास अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब्स हैं, उनको वो मतलब वो घर में लॉकडाउन है, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते। और आप फिर पैसे अगर आपके पास बच जाते तो आप कहाँ डालोगे? पहले आप फिक्स डिपॉजिट पर डालते थे, अब वो साल का 4.5% दे रहे हैं। आप गोल्ड में डालते थे, गोल्ड के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं। रियल एस्टेट में डालते थे, रियल एस्टेट की भी प्राइसेस स्टैग्नेंट है काफी देर तक। तो कोई ऑल्टरनेटिव अगर नहीं बचा है तो लोग पैसे स्टॉक्स में ही डालते हैं इवेंचुअली, और वो घर में उनकी बचत भी ज्यादा हो रही है। और जिनके पास पैसे नहीं थे, शायद में नहीं है अभी, या जिनके जॉब्स गए हुए हैं, उस पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो वैसे ही वो पहले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। तो वो अगर उनके पास आज पैसे नहीं है तो वो मार्केट से पैसे नहीं उठा रही है, मतलब मार्केट से निकाल नहीं रही है। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर ये एक्सप्लेनेशन है कि जब रिकवरी हो जाए मार्केट, मतलब अब कोविड वैक्सीन आ जाए, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और फिर लोग वापस आ जाए, तो इकोनॉमी वापस आ जाए,
तो यही डिस्पोजेबल इनकम लोग ट्रैवल में, टूरिज्म में, रेस्टोरेंट में खर्च करेंगे और फिर ये मार्केट में इतना पैसा आना कम हो जाएगा। दैट इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि लॉकडाउन हो रहे हैं और बाकी सब कुछ बंद है बाहर, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर है। एब्सोल्युटली, तो स्टॉक मार्केट्स इसलिए ऊपर रहे हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा इनकम है अभी लोगों के पास वो ज्यादातर अभी इक्विटीज में जा रही है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, सभी का पार्टिसिपेशन बाजार में बढ़ रहा है। इसी के विपरीत जो अभी डेटा हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार सेल कर रहे हैं, आउटफ्लोज हो रहे हैं। इनफैक्ट इस क्वार्टर की भी बात करें तो काफी ज्यादा सेल ऑफ हुआ है इस समय एफआईआईज की तरफ से। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एफआईआई सेल कर रहे हैं फिलहाल, और क्या ये एक किसी भी तरीके का वरी फैक्टर है या कंसर्निंग फैक्टर है? तो इस हिसाब अगर अगर आप देखें डेटा, जितना ट्रेडिंग डेटा हमें दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कर रहा है, उसी हिसाब से अगर आप ओनरशिप डेटा, जैसे पूरी मार्केट कैप जो कंपनीज की मार्केट कैप में मिलाकर उसमें से प्रोमोटर को हटाइए, प्रोमोटर तो 50% है, बाकी में कौन सबसे ज्यादा है, वो है एफआईआई। एफआईआई ओन्स 43% ऑफ नॉन प्रोमोटर स्टेक इन द इंडियन मार्केट। तो इस हिसाब से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पहले उनका 18% होता था, अब वो 9% हो गया टोटल मार्केट कैप का। तो उन्होंने बेसिकली एफआईआई ने काफी, अगर आप प्रोमोटर और एफआईआई को मिला दें तो रफली 75% ऑफ द मार्केट इज ओन्ड बाय दीज टू, प्रोमोटर प्लस एफआईआई। अगर वो आज बेच रहे हैं तो थोड़ा सा ही बेच रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर अगर खरीद रहे हैं वो भी यूजुअली ऑफसेट करने के लिए होता है, यूजुअली वो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड उनके ऑफसेट में आते हैं, लेकिन जितना उन्होंने लास्ट मार्च को बेचा, लास्ट मार्च में एक महीने में उन्होंने 60,000 करोड़ के इक्विटीज बेचे थे, उतना पूरी क्वार्टर को भी देखें तो मिलाकर भी 9,000 करोड़ अप्रैल में, जून में आई थी, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च में अगर आप मिला के भी देखें तो 9-10 हजार करोड़ के करीब ही होता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। उनका ओनरशिप है अभी करीबन 90 लाख करोड़, तो उसमें से 5-10 हजार करोड़ बेच भी दें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि देखिए निफ्टी जो है वो सबसे बड़े स्टॉक्स है जिसमें एफआईआई की सबसे ज्यादा ओनरशिप है, वो करीबन फ्लैट है। अगर आप देखेंगे फरवरी से अब तक एक्चुअली नीचे है, लेकिन मिड कैप करीबन 10% ऊपर है। तो जहां पे एफआईआई नहीं पार्टिसिपेट करती, जहां इंडियन रिटेल का पार्टिसिपेट करती है, वो ऊपर जा रहे हैं स्टॉक्स, और एफआईआई वाले स्टॉक्स फ्लैट हैं, नीचे हैं। Help us understand more specifically, sir, now that you say that, keeping in mind that individual investors now command a lion's share in the average daily trading volume, how would you advise them to allocate their funds between large, mid, and small caps? Which are the particular sectors that you're bullish on? Any particular names that you would want to share? Any of your top picks that investors should keep on their mind when they're creating a long-term portfolio at this point in time? So I think two very interesting pointers here. First, on the large caps, I don't think there's an informational advantage in individual companies. You and I will not be able to make out more than an institutional investor, and even the institutional investor is getting the same data we are getting. So there are so many people tracking these stocks that I don't think there's a big informational advantage in large caps. So if you're a little large cap oriented, I would say just go with the index. It's a Nifty index fund, Caribbean, which gives you exposure to the top 50 companies in India. Or take the Nifty 100 or something like that, which is much easier for you to participate because you won't know which large cap is doing what. The mid caps, I think you can be more selective on, but recently we have seen even mid cap funds have struggled with trying to get a great return over a generic mid cap index. So where I would say the individual investor to focus on is sectors that he understands or he or she understands, and sectors that she can see growth in the next 5 or 10 years. I'll give an example. If electric vehicles are coming, then a lot of the mid caps that are manufacturing things for diesel and petrol vehicles
OEMs, I mean not OEMs, but say ancillary companies. Those companies will not do very well. Whereas companies manufacturing things that will still work even in non-electric vehicles, that sorry, even in electric vehicles, those companies will do better. For instance, आप अगर exhaust pipe देखें, exhaust pipes are not required in electric vehicles. So next 5-10 years, if we move to electric vehicles, their business will only come down. So you can start focusing on companies and sectors which, for instance, will benefit from the move to electric rather than otherwise. That's just one example. There's lots of others. In the banking space, you can look at housing finance for the smaller sections of society, the economically weaker sections of society, because the most expensive housing is now overpopulated. So the companies that are financing those houses, or companies that are making those houses, are less useful than the companies that are making housing for the economically less advantaged strata of society. So you can concentrate your investments like that. We have focuses on a lot of firms. We have IT, we have pharma from the exports area. We have auto and auto ancillaries in India, looking at electric also as a theme. We also have some of the smaller secured lending finance companies like gold finance, where there is some potential for longer term growth, but without the NPAs that are likely to hit the Indian system now. We think that these are the spaces plus a lot of others. There's a lot of specific individual companies. I won't name them because we are a PMS and continue to be buying them. But these are the spaces we like the most: IT, pharma, auto ancillaries, and some of the financials. And of course, a lot of technology. Companies that use technology. Hopefully, Zomato's IPO will come and we'll be able to participate in that as well. But those are the kind of companies that we think there's a lot of work ahead. Okay, thank you very much, Mr. Shenoy, for sharing your thoughts on the market outlook and the specific sectors like IT, pharma, auto ancillaries, space, and select financials, and the upcoming new age technology companies that you're really bullish on, so that investors can definitely start to keep them on their radar as well. It's been a pleasure speaking with you. And with that, we wrap up this edition of Market Masterclass. A whole lot is awaiting on the other side, so don't go away anywhere and stay tuned on to money9.com.